हाय विशेष, मेरे लाइव स्ट्रीम सेशन में आज आपका स्वागत है। आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयर 2023, विच इज डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय बेन एफ्लेक एंड स्टार्स मैट डेमन, बेन एफ्लेक, क्रिस टकर एंड सम many 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 more great talented people. सो यस, शुरू करते हैं। पहली बात, विशेष जी, कभी ये फिल्म के बारे में सुना गया था आपसे और कैसा डिस्कवर किया, और जस्ट आपने जब देखा था, सो व्हाट वाज योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस? कैसा लगा था आपको? So first of all, हाँ, शिकागो बुल्स। and I totally did not buy this jersey just for today's live stream. But anyways, ओके। I'm kidding. बट I'm आज kidding. एक्चुअली उसके लिए ये पॉडकास्ट पे आई थिंक जानबूझ के ये पहना, लाइक कि Yeah, इंटेंशन for था। sure. Yes, yeah. Chicago Bulls, Michael Jordan, a love story that never ends. To begin with, ओके ओके yeah. He played most of his career with Chicago Bulls. Most of his like almost 80% of his professional accolades came with Chicago Bulls. So that is one. Other than that, yeah, I mean, I knew that this movie was in production, was in development since a very long time. I had heard about it because um, I am a big fan of Michael Jordan. Not a huge basketball fan, but I am somebody who does follow basketball whenever I get the chance to. Again, ओके not a big sneakerhead also, but I know what is going on in that world also. Like right now, we are seeing this big boom in the world of ओके sneakers. There's a black market. There's a whole Black Friday sale that's going on. There are drops happening, and the price of sneakers actually right now increases more exponentially than gold. So we'll get into all of that and how Air is responsible. The movie Air and the events which transpire in the movie Air are somehow ओके responsible for all of like the world that we're living in right now, which is very sneaker driven and basketball driven. So we'll get into all of that. But yes, I was aware of that this movie was being made, and when I came to know that this was being made by the very able pair of Matt Damon and Ben Affleck, I knew that something good was. And Jason Bateman was supposed to be a part of it. Chris Tucker was supposed to be a part of it. Viola Davis was supposed to be a part of it. The cast, I was already sold. I knew that this is going to be something special. So yeah, let's talk ओके। about. श्योर थिंग। मैंने जब ये फिल्म के बारे में तो कुछ पढ़ा नहीं था, कुछ देखा नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने एक प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाया था कि मैं वीडियो लाइक मैं फिल्म ट्रेलर्स क्यों नहीं देखता, और मैं स्पेसिफाई किया था कि मुझे सब पता चल Yeah, जाता है, और मैंने I had seen that. Yeah. हाँ, सो वही कि मुझे इस फ़िल्म लाइक हर फ़िल्म की तरह इस फ़िल्म का भी ट्रेलर नहीं देखा था, और मुझे पता नहीं था। सिर्फ़ एक लॉग लाइन पता थी कि जस्ट दिस फ़िल्म इज़ अबाउट नाइकीज़ हंट एंड ग्रूमिंग ऑफ माइकल जॉर्डन, और मुझे Absolutely, yeah. इतना ही पता है, बस इतना ही पता था। और माइकल जॉर्डन, ओके, हाँ, सुना गया कि बास्केटबॉल का कोई प्लेयर था, मुझे उतना ही पता। मैं बास्केटबॉल ज़्यादा फॉलो नहीं करता, सिर्फ Yeah. थोड़े ही 2-4 नाम पता है, माइकल जॉर्डन, कोबी ब्रायंट, लेब्रॉन जेम्स, लमार ओडन, वो सब Yeah. पता है। Fair बस enough. बाकी बाकी कोई पता है ना, शिकागो बुल जैसे लाइक ये पता है मुझे। सिर्फ़ इतने ही मुझे पता थे। सो फिर जाके मैंने लाइक ये फ़िल्म के बारे में थोड़ा सुना, एज़ इन जस्ट लोगों ने बोला कि ओके, ये देखो, अच्छी है फ़िल्म, अच्छी स्पोर्ट्स फ़िल्म है, लाइक काइंड ऑफ प्री समर ब्लॉकबस्टर, आई वुड से, नॉट अ ब्लॉकबस्टर, क्योंकि लाइक थिएटर्स में तो आई डोंट थिंक, यहाँ पे तो नहीं थी। वहाँ पे Yeah. यूएस में आई थिंक थी, मेबी हो सकती है, क्योंकि लाइक वो क्वालीफाइज़ होने के लिए, फिर उसके लिए मेबी। No, yeah, it was given a just a 1 month limited release हाँ, in the US एग्ज़ैक्टली, वो theaters. लिमिटेड रिलीज़ But देना वो पड़ता है वैसे ही उसको। था like the way Glass Onion was given, for हुँ, example. हाँ, ग्रोमा, और Uh, आई थिंक वो ज़्यादातर जो जो स्ट्रीम्स वाली आयरिशमैन वगैरह सबका करेक्ट, जैसा था. It हाँ, was the जो same kind of release. कॉन्ट्रैक्चुअल जितना Just to रहता make था। it qualify for these एब्सोल्युटली, major awards next year. Yeah. एब्सोल्युटली वैसे। सो मैंने उतना तो नहीं, मैंने फ़ॉलो किया था, सिर्फ़ ये जब ये अमेज़न पे आया था, तो तभी मैंने फ़ॉलो किया था, और जब मैंने देखा, तब काफ़ी अलग-अलग फ़िल्मों के मुझे वाइब आने लगे। नॉट जस्ट लोग बोल Yeah. रहे थे कि मनी बॉल, और ये थंबनेल का टाइटल भी Yeah. है, लाइक मनी, इज़ दिस द बेस्ट स्पोर्ट्स फ़िल्म सिंस मनी बॉल? आई Hmm. फ़ील येस एंड नो, क्योंकि मनी बॉल के आगे भी, और लाइक मनी बॉल और इसके बीच में भी एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फ़िल्म बनी थी, मुझे ऐसा लगता है, फोर्ड वर्सेस फरारी। वैसे इट्स इट्स सच अ गुड फ़िल्म कि जहाँ पे स्पोर्ट्स को आई डोंट थिंक इतना कुछ दिखाया है, लाइक ना के बराबर ही दिखाया है, जस्ट उसके स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड में ही सब कुछ चल रहा है।
और यही सेम Absolutely. चीज, सिमिलर चीज आई वुड से मनी बॉल में चल रही थी कि कैसे द गेम बिहाइंड द गेम कैसे चलता है, और एट द एंड Absolutely. तक आपको सिर्फ बेसबॉल के बारे में क्या हो रहा है, ट्रेड डेडलाइन, द स्ट्रीक और वो सब कैसे चल रहा है, तो वो कैसे प्लेयर्स का कट ऑफ कर रहा है, ये कर रहा है, वो सब पता चल रहा है। इसमें भी हम्म, वही चल रहा है कि यार क्या हो क्या रहा है, लाइक एज इन बास्केटबॉल तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा लोगों को लगेगा मे बी। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मैं लाइक जीरो एक्सपेक्टेशन से गया था, तो मुझे तो कि कुछ अच्छा, लाइक काइंड ऑफ थोड़ा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसे भी वाइब्स आ रहे थे कि आई वुड से कि लाइक वो बिजनेस पर्सपेक्टिव जैसे ऐसे जैसा कुछ दिखा रहे थे कि लाइक कैसे exactly. फिल नाइट भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे। और मैं काफ़ी सरप्राइज था, सिंस द पर्क्स ऑफ नॉट वाचिंग एनी ट्रेलर्स, मैं काफ़ी सरप्राइज था कि वाह फिल नाइट भी है यहाँ पे, जस्ट ही बट इन अ सपोर्टिंग रोल। जैसे अभी उनकी एक बुक है बहुत फेमस हुई है, मुझे लगा लाइक मे बी कोई Shoe अच्छी बड़े रोल पे आएगी, लाइक शू डॉग, करेक्ट आपने बराबर बोला, शू डॉग की dog. वजह से काफी मेजर रोल में आएगी, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन मैं एट द एंड पता चला कि लाइक एट द नहीं सॉरी स्टार्टिंग में पता चला कि वाओ ये एक बेन एफ्लेक की फिल्म है, डायरेक्टेड फिल्म है। आई थिंक मैंने उनकी गई लास्ट मैंने आर्गो ही देखी थी, आर्गो के बाद उनकी कोई अच्छी फिल्म आई भी नहीं थी, कोई डायरेक्टेड फिल्म, सो मैंने हम्म, ज़्यादा देखी भी नहीं थी। और आई थिंक उनकी एक्टेड फिल्म भी कोई ज़्यादा ज़्यादा चल भी नहीं रही थी, लाइक वो एक ऐसा फेस चल रहा था आई वुड से। आई थिंक हम्म, लास्ट ज्वेल भी इतना कुछ कमाई नहीं थी, वैसा हम्म, वैसा था, तो रिडली स्कॉट की थी वो उनकी रिटन फिल्म हम्म, वैसे। सो हम्म, मेरे उनकी एक फिल्म थी जो मैं नाम भूल गया, मैं आई थिंक मैं सर्च करता हूँ, जो उन वो बास्केटबॉल कोच रहते हैं और फिर जाके वो बास्केटबॉल टीम को कोच करते हैं और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो एक uh, फिल्म Ben Affleck की ना? बेन एफ्लेक की, करेक्ट, मैंने वो भी देखी थी। Yeah, मुझे yeah. I can't remember the इतनी name गई also right now, but हाँ, yeah, मुझे इतनी नहीं लगी थी जितनी ये वाली मुझे अच्छी लगी। हाँ, द वे बैक, करेक्ट, जो अभी मैंने सर्च किया, द वे बैक थी, जो काफ़ी वो भी एक बास्केटबॉल कोच रहते हैं उसमें और correct, फिर correct, उन लोग correct, को correct. so मैंने इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी एयर लगी ऑब्वियसली। लेकिन हम्म, इस फ़िल्म में माय गॉड, लाइक क्या क्या बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थे, जब एज़ इन अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लाइक आई मीन राइट फ्रॉम बेन एफ्लेक टू मैट डेमन और लाइक राइट हम्म, फ्रॉम पूरा कास्ट। एक चीज हम्म, काफी सरप्राइजिंग लगी कि उन्होंने माइकल जॉर्डन का फेस दिखाया नहीं, बोला यार ये क्यों ऐसा, No, लेकिन but एट he द एंड told. में सोच So sorry to cut you off, but इसका जवाब दिया था Ben Affleck ने in one of his some conferences or something that he had attended. So he had mentioned why it was a conscious decision to not keep Michael Jordan as the character. Because ओके Michael, in this whole situation, in this whole scenario, Michael Jordan himself was not that much of a factor. ओके Uh, he करेक्ट was, he had said ki, boss, I'll do whatever my mom and dad tell me, and I don't know any better. And mom and dad used to listen to this guy called David Falk, which was played by Chris Messina in the movie, right? So he हिज was their मैनेजर, एजेंट sports सॉरी, agent rather, not the manager. यस यस यस, So a manager is basically somebody who handles your everything day to day. A sports agent is basically who वो जो handles all your डील करते हैं, commercials, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ गए, right? वो Can you डील्स hear करते हैं। me? यस, हाँ Your हाँ हाँ, okay, right. There was some kind of a lag. So yeah. So he said ki Michael Jordan was involved at some level in the development of this movie. Obviously, they had taken a lot of inputs from him. और ये सब कुछ जो भी बना वो माइकल जॉर्डन की परमिशन और उसके उसके साथ ही बना है. उसके मॉम डैड का नाम क्लियरली लिया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ही इज नॉट produced this movie or he's not the executive producer or anything of that sort, which is very common in Hollywood. But still, he was involved. He's not the executive producer. He is not directly being profited from this movie at all, so to say. करेक्ट, But having said that, he was like, I was not that much of a factor. I was just a 18-year-old kid who was just interested in his basketball at that time, and I did not really care what I do and where I'll end up. But I was very sure about this one thing, that I want a Mercedes, which is what is mentioned in the movie also, that like he wanted the $250,000 dollars ka deal, but he was very sure that the Mercedes has to be over and above it. So so he's like, I was just a kid who wanted Mercedes. The money all went to my parents, but the Mercedes came to me, and I was more than happy with that at that point in my life.
And same thing Ben Affleck also said in his interviews that it was Jordan's wish that it's okay if you don't feature me at all in the movie also. And B, they just felt that Michael Jordan is so iconic. So these all people who were functioning behind the scenes: Phil Knight, Sonny Vaccaro. What was his last name? I'm forgetting it. Sorry. Matt Damon's Like character. in Matt Damon's character, correct? वैसे. Yeah. So all these people were sort of behind the scene figures, right? They were not exactly people who were there in popular media who have their faces plastered all over, popular media. It's not like that, right? It's only Michael Jordan who's the pop culture icon, so to say, uh, among all of these figures. So they wanted that to remain behind the scenes because they felt that Jordan is too big a figure for any actor to actually play him as a character. So they just felt that it would be kind of unique, that it is a story about getting Michael Jordan on board, but Michael Jordan himself is barely there. So that was Absolutely. by design. Yeah. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, ये मैं Yeah, खुद yeah, yeah. थोड़ी. I think it was some Comic Con he went to. I don't remember which one. Some Comic Con or something he went to. Uh, this guy, Ben Affleck, and he mentioned it over there. So yeah, I remember that. Okay. This was prior to like 2-3 months back. Yeah. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ Yeah. डेफिनेटली अभी कुछ कॉमिक कॉन आया होगा, मुझे भी नहीं पता, जब भी सैन डिएगो और न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन आते रहते हैं. Probably not that actually. Probably something much more low profile actually. Okay. Or maybe it was some kind of film festival. I'm really not sure where I heard this or read this, but I've seen this clip of his saying this. Why he explained why that was there. नहीं एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि आई थिंक ये फिल्म प्रीमियर भी साउथ बाय साउथ वेस्ट में हुआ था शायद से, तो मे बी वहाँ पे अभी कहा हो सकता है. और मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं लाइक ज़्यादा इंटरव्यूज फिल्म के होने के बाद देखता हूँ, फिल्म के रिलीज और फिल्म के देखने के बाद. Right. हाँ, नहीं आप कुछ बोल रहे थे. I had also seen this interview now after watching the movie, but the interview is from 2-3 months ago is what I was saying. अच्छा, okay. मुझे like he had already revealed it. For me, it was a news. I saw it after, so I did the same thing as you. I did not watch any interviews and all prior to watching the movie. I just saw the movie last week, and that's when I saw everything around it. Like that's when I did my own research about it. The people that I did not know, which we'll get to in a moment. But yeah, so the interview was old. बट जैसे लाइक बहुत लोग स्क्रिप्ट की प्रशंसा कर रहे हो कि बहुत लाइक स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लाइक और इवन मैट डेमन बेन एफ्लेक की डायरेक्टिंग की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपको लाइक स्क्रिप्ट पे पहले बात करते हैं, लाइक आपको क्या अच्छा लगा इन स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले इन जनरल पे, लाइक आपको योर थॉट्स ऑन इट. Yeah, everything I really liked, to be very honest. Like the story, I knew the story. Okay, I know the story because I've read Shoe Dog again with Phil Knight's biography. I've read that. I know this about this story because this is actually a very landmark case in the history of sports persons versus these corporates. So this was actually a landmark case which has ensured that now every major athlete gets his chunk of the profits made off of his or her name. So this case is like a case study. I think it is taught in many MBA colleges and MBA courses also. Please learn from this case study. It is that important. Yes, it is landmark. And as I said, like it paved the way for a lot of things. Now you imagine 10% of every Air Jordan sold was paid to the Jordan family. In the first year itself, they did $163 million worth of sales. In the current times, Air Jordan is averaging anywhere between $2 to $2.5 billion per year in sales, and he's still making money off of it. So imagine how much he's making, and how much that family is making. So obviously, it's unparalleled and it's unrivaled. So I knew about it, but yes, to come back to the question of the script, I really think that the script they kept very true to the script. They kept very loyal to the real story, as much as I can tell. There was no unnecessary dramatization, which I loved. And the one thing that I really liked, something that might not have been possible in Bollywood, for example, and no Bollywood bashing here, but just saying that what would have happened in Bollywood is that the character of Phil Knight would have been the main character. And you know it and I know it. Okay. But here, they let
Sunny's character become the main character, and Phil Knight is just there as a secondary support figure, or just a, Mhm. just somebody Right. who's overseeing things, basically. Mhm, He's mhm. letting them run the show. बरोबर. Matt Damon's character and Jason Bateman's character, हं, right? हं. So that is something that I found amazing. Also, kudos to Ben Affleck for not falling into the trap of being a director who's giving himself more footage than the other actors. you know, हाँ, he avoided that very well, and he has done that in the past also. He sometimes is overindulgent as a director, but in this हुँ, case, thankfully, he did follow the strategy of less is more, and हुँ. uh, and did not give us any unnecessary dramatization, any unnecessary sobby moments, nothing. It was just sticking to the storyline and Okay. to what was important, and अच्छा. uh, and yeah, and also they did not overcomplicate it. Like, they could have very easily overcomplicated it, the story going in 10 different directions, and like some clauses being put here and there. I've seen people go wrong with these corporate movies in that sense also, where they अच्छा. overcomplicate a simple situation so much that it becomes difficult for a lay person to हुँ, actually follow it and understand it. But this हुँ. movie uh, does not make it overcomplicated also, but yet at the same time does not spoon feed the audience also. So it strikes the perfect balance, the script, of actually not taking the audience for granted also, and then also giving them something to easily chew upon. हुँ, So that's where I एक्चुअली feel the script विशेष wins. हाँ, विशेष मैं तुझे बोलूँ कि मैंने थोड़े हफ्ते पहले ही एक बास्केटबॉल वाली ही फ़िल्म देखी थी, कोच कार्टर करके, अगर आपको पता रहेगा। Yeah, yeah. इसकी है, आई थिंक, लाइक उसमें सैमुअल जैक्सन है उसमें, आई Yes, थिंक yes, yes. चैनिंग टेटम भी है, लाइक वेरी द अननोन चैनिंग टेटम, और ऑक्टेविया Old स्पेंसर जो old कि movie, yes. बहुत बहुत पुरानी 2010, फ़िल्म है। वो 2005 nothing की फ़िल्म है, आई 2010. थिंक पाँच 2005 की फिल्म है, 2006 की। yeah, yeah. हाँ, सो वहाँ की है। तो मैंने ये देखी थी। क्या पता नहीं क्या इत्तेफ़ाक से मैंने वो देखी, और फिर जाके मैंने थोड़ा बास्केटबॉल थोड़ा एकदम ही थोड़ा फ़ॉलो किया करना शुरू किया था। बहुत छोटा स्टिंट था कि वहाँ पे लाइक कौन से क्लब्स खेलते हैं, क्या कौन से कैसे क्या क्या करते हैं, और अभी आई थिंक बास्केटबॉल में तो प्लेऑफ्स अभी शायद से शुरू हुआ है था, नहीं, मुझे नहीं पता। playoffs was always there. Yeah. नहीं, नहीं, अभी एज़ इन अभी ये सीज़न में चल रहा अच्छा, ये है, सीजन का, हाँ मंथ ऑफ हाँ, में। just now, yes, yes. Yeah, मंथ ऑफ मई में वैसे आई थिंक yeah, मेरी yeah. फेवरेट, लाइक आई वुड से, मैं बेसबॉल फॉलोअर ज़्यादा हूँ। सो अच्छा, डॉजर्स, जो लॉस एंजेलिस डॉजर्स है, तो उनके पेज के थ्रू पता चलता है कि लेकर्स आर इन द प्लेऑफ्स। सो वैसे मुझे पता चला था वैसे। सो आई एम Lakers is क्वाइट also a एक्साइटेड। Los Angeles एग्ज़ैक्टली। team only, एग्ज़ैक्टली, but yeah, एग्ज़ैक्टली, इसलिए नहीं, इसलिए तो लाइक उनके थ्रू पता चला कि लेकर्स आर इन द प्लेऑफ्स, और लाइक उन लोग yeah, क्या है कि एक-दूसरे के ऐसे टीम्स को सपोर्ट करते रहते हैं। सो लाइक यहाँ पे भी उन्होंने लेकर्स को ऐसे सपोर्ट किया था वैसे, और बिल्कुल, बिल्कुल, शिकागो, बिल्कुल, लाइक कब्स है, शिकागो कब्स जो शिकागो की नॉर्थ साइड की एक बेसबॉल टीम है, उन लोग भी कैसे बुल्स को सपोर्ट करते रहते हैं वैसे। इवन correct, correct. यांकीज़ और मेट्स है जो न्यूयॉर्क की टीम्स है, उन लोग भी आई थिंक निक्स निक्स बराबर। सो New York Knicks, yeah, न्यूयॉर्क निक्स उनको सपोर्ट करते हैं वैसे। सो वहाँ से पता चला था कि कैसे कितने सारे टीम्स हैं और क्या कौन-कौन प्लेयर्स हैं, वहाँ से थोड़ा और इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ, और फिर अचानक से correct, ये correct. फ़िल्म आती है। जस्ट इट्स अबाउट बास्केटबॉल। इट्स लाइक ये सब भी एक ही महीने के टाइम फ्रेम में होता है सब, तो इतना अच्छा लगता है कि लाइक सभी कुछ इत्तेफ़ाक जैसा तो नहीं लगता है, पता नहीं, लेकिन सब इत्तेफ़ाक है। Very true, तो very true. काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा मुझे दोनों फ़िल्म देख के। मैंने जब ये कोच कार्टर भी देखी, तो वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग, जैसे एक कोच की Yeah, yeah, लाइक के ऊपर पूरा काफ़ी अलग जैसा सिचुएशन था कि काफ़ी वो एग्ज़ाम्स yeah, और yeah. वग़ैरह उनके वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उनके लिए, और वो सब रखे थे। सो वो भी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन अ, बेस्ट थिंग आई वुड से यही लगा था कि मैंने एयर देखी। एक्चुअली जब देख रहा था तो तभी अ, मुझे एयर जॉर्डन्स सिर्फ़ लोग बोलते थे, "ओह वाओ! नाइकी एयर जॉर्डन्स लिया, नाइकी एयर जॉर्डन्स लिया।" लोगों ने ऐसे बोलते थे। मुझे उसका Yeah, मतलब ज़रा भी नहीं पता था, और yeah. आपके जैसा तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं काफ़ी नया था इस पूरे दुनिया में, और मुझे कुछ No, पता I'll भी नहीं I'll था। tell you something. I'll tell you something funny. You know who introduced me to the world of Air Jordans and the whole sneaker, this world that I'm telling you about? हाँ, It was actually my nephew, who's like 14 years younger to me. ओके। So he became a sneakerhead much before I did. Man, I will not even consider myself a sneakerhead. I have just
one Nike Air Jordan actually. I do have one, but that's all. Like उसको मैं normally भी पहनता हूँ. Like these sneakerheads actually keep them and they store them as a तिजोरी में रख के like gold. They keep it with them. My nephew does नहीं it. So एक्चुअली, हाँ एक्चुअली मैं वही कि मैं खुद जब ही देख रहा था, मैं खुद हैरान था कि ऐसा कुछ भी था कि नाइकी एक जमाने में इतना नीचे गिर रहा था कि उनको इतना सब स्पॉन्सरशिप और वो सब की जरूरत, क्योंकि अभी के जमाने में हम देखते हैं कि नाइकी इज एट द टॉप ऑफ द थिंग। लाइक नाइकी, ओके, अगर आपने अब नाइकी पहन रहे हो तो एक क्लास जैसा है। और आई थिंक मैं खुद भी एक नाइकी यूजर हूँ, मेरे पास भी नाइकी के शूज बिल्कुल है, जो बिल्कुल. मैं बोल सकता हूँ कि आई एम अ प्राउड नाइकी यूजर, लाइक आई एम अ फैन। Absolutely. सो डेफिनेटली मैं खुद हैरान था कि वाओ, नाइकी की क्या हालत हुई लाइक होती थी। और लाइक आदिदास वाज द थिंग, आदिदास वाज द करंट नाइकी। Yeah, और yeah. मैं हैरान हो गया था। और आई थिंक वो थर्ड ब्रांड तो मुझे पता भी नहीं, और उनके Converse. बारे में फिर पता चला कि लाइक नाइकी ने उनको ओवरटेक कर दिया था, वैसे खरीद लिया था। Yeah, तो yeah. Converse used to be a big deal also back in India में नहीं था. India में it came only after Nike took it over. So तब तक Converse wasn't there in India. Converse back in the 70s and 80s, it was a much bigger deal in North America, I would say, not just the US. Canada, maybe it was a big deal. Europe, maybe I'm sure they had a lot of market. But yes, everybody knew that Converse was not coming up with something new. So it was one of those things where you know that this one company has the market share, yes, but they're going to go out because they're very generic. They're not putting in the effort to actually capture the new markets, which is something that Nike and Adidas was constantly trying to do, which is why they are now the market leaders and Converse is gone. So बराबर। so yeah, so it is a very fascinating case study. I would say that this movie is actually a business movie rather than it's more of a corporate movie rather than a sports movie, to be very honest. Because इसलिए there's इसलिए मैंने not a lot of इस sports. हाँ, एग्जैक्टली, इसलिए मैंने आपको बोला कि वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी वाइब दिलाता है, कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में कैसे जस्ट बिजनेस साइड ऑफ इट और वो सब दिखा रहा था कि कैसे बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। फोर्ड Absolutely. वर्सेस Yeah. फरारी, फोर्ड वर्सेस फरारी में भी आई वुड से वो वहाँ पे थोड़ा बैलेंस आउट हुआ है कि स्पोर्ट्स के बारे में भी है, लेकिन वो कंपटीशन के बारे में भी है कि कैसे बीट आउट करेंगे फरारी को फोर्ड कंपनी। Correct. वैसे काफ़ी अच्छी Correct. जैसी हाँ, तो मैं लाइक मैं मैं वही कह रहा था आपसे भी कि मेरे हिसाब से दिस मूवी, इफ आई हैव टू ड्रॉ अ कंपैरिजन, तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये मूवी फोर्ड वर्सेस फरारी से ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू मनीबॉल, बिकॉज मनीबॉल वाज ओके। स्टिल वेरी मच टेक्निकली a sports movie because it went into the tactics of it. हुँ, Yes, money was a major aspect, but money in terms of how to make this team, how to make a team in $10 million, for example. I don't remember the हुँ, exact करेक्ट, numbers करेक्ट, that they करेक्ट। had, हुँ, 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 but it went in that direction, हुँ, right? So हुँ, this is more about how to get a sports person on board. It's like the equivalent of this in terms of an Indian milieu would be something like uh, so there used to be one very famous ad person, marketing person in India called Mark Mascarenas, yeah, something his name was, some Mascarenas, ओके, Indian ad maker, marketing guy, etc., etc. In ओके, the year 1990s, no, not 1996, slightly later than that. I think 98 or 99 or something. He was the first person to have signed up uh, Sachin Tendulkar on a 5-year deal for 100 crore rupees. ओके, In India, this happened. Late 90s, I don't remember the year, but yes, it was somewhere around that time period. ओके, And it was a landmark deal in terms of Indian sports business, करेक्ट। the whole spectrum, right? हुँ, And the deal was कि इसके बाद whatever ads does, he will not get any money. He has been paid 100 crores out upfront. हुँ, लो और आपको इतने इतने डेट्स हमको देना है, that's all. हाँ, So उसका भी टेंशन गया. इन लोगों को they have a and they had an exclusive deal with him. So हुँ, अगर उस पे कभी मूवी बनेगी कि how to get Sachin on board in terms of Bollywood, हुँ, that will be a movie much more closer to this compared to say a Sachin biopic, is what I meant to say. हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली, लेकिन पता नहीं वो कैसे टर्न आउट होते हैं। जैसे आपने बोला कि उस पे थोड़ा मिर्च मसाला एज़ इन जस्ट लाइक द एंटरप्रेन्योर, द एक्चुअल गाय, वो ज़्यादा क्रेडिट लेगा आई वुड से दैन द गाय हू एक्चुअली मेड इट ऑल पॉसिबल वैसे। सो
लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आई वुड से, क्योंकि मे बी कुछ अच्छा ऐसा एयर एयर जैसा ही क्या कुछ पता, क्या निकल जाए, पता, किसको you पता never know, कैसे। you never know. अभी there are filmmakers who are हम्म। uh, doing some really interesting work in Bollywood also. So maybe somebody does go there and create something beautiful. I mean, we never know. Let's not डेफिनेटली। discredit हम्म। anyone and anything. करेक्ट करेक्ट। So I'm keeping my hopes open. But otherwise, also in general, I think yeah, एक it is क्वेश्चन a movie. एक्चुअली, Air, yeah. एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे है भौमिक के तरफ से, हमारे Hmm. दोस्त। तो व्हाट डिड योर नेफ्यू थिंक अबाउट द फिल्म, विशेष? Oh, he absolutely loved it. He absolutely loved it. He saw it twice, I think, if I'm not mistaken, already, and he loved every aspect of it because he has some 5, 6 Air Jordans right now, other than his other entire set of sneakers, which is not Jordans, but like other sneakers that he already has. He has a lot of Adidas also, actually. So yeah, I mean, he loved the whole business aspect of it. He Matlab, yeah, like me and him had so much to discuss about it. Like we had like a good hour-long conversation about all the people involved in this whole movie and everything. So yeah, it was good talking to him about it. And thank you for the question, Bomik. So yeah, डेफिनेटली। बट हाँ, आप कुछ yeah. बोल रहे थे, सॉरी मैंने कट किया, लेकिन हाँ आप कुछ बोल रहे अभी थे। याद नहीं आएगा मुझे because I have a very bad case of short-term memory loss. But नो प्रॉब्लम। but yeah, लेकिन go on, please. आप Yeah, you were आप saying. एक्चुअली, लाइक मुझे एक चीज़ थोड़ी ऐड करनी थी कि लाइक कैसे अ, मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी रूटेड अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन कल्चर यहाँ पे प्रेज़ेंट किया था, कि कैसे यहाँ पे लाइक Yeah. कोई भी स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, लाइक ऐसे आई वुडंट कॉल इट, लाइक मैंने एक सीरीज़ देखी थी, आई वुड से एक एक सीरीज़ देखी थी, फ्राइडे नाइट लाइट्स करके। सो इट्स Mm-hmm. अबाउट अ कम्युनिटी इन टेक्सास, Hmm. जहाँ पे स्कूल, जो हाई स्कूल में फुटबॉल होता है, राइट, अमेरिकन फुटबॉल। सो Yes. इट्स अबाउट दैट कम्युनिटी, एंड वहाँ पे वही कि एवरी फ्राइडे नाइट वहाँ पे फुटबॉल होता है, और कैसे उनकी ऐसे गुजारे होते हैं, और वैसे सो लाइक एक पॉइंट आता है जहाँ पे लोग बड़े होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। सो बच्चे बड़े होते तो कैसे उनको ऑफर्स आने शुरू करते थे फ्रॉम लाइक एक्चुअल, आई वुड से, हाँ, कॉलेजेस, वैसे। सो वो कॉलेजेस से ऑफर्स आने शुरू हो जाते, तो वहाँ पे भी वैसे ही दिखाता कि कैसे the parents are actually much involved than the actual student, the actual player, Yeah. Yeah. कि वहाँ पे अगर पेरेंट्स लाइक उस स्टूडेंट को साइन करना है अगर वो उस कॉलेज के साथ, सो Yeah. उनके पेरेंट्स के थ्रू पहले जाना पड़ता है वैसे, Huh. Huh. नॉट जस्ट एनी It's ब्लैक it's also a पर्सन और good thing, वाइट। na. It's actually a very good thing, I feel, करेक्ट। because these kids at 16, 17, 18 don't know what the ins and outs of the corporate world. Yeah, these people, हाँ। these corporates would eat them alive. And for one good, heartwarming story where a kid gets what he deserves, there will be hundreds of stories where a kid got ripped off and हम्म। his names and likenesses. So, in fact, if you remember at the end of the movie Air, uh, हम्म। there were there were a few statements which came written on the screen, right, हम्म। about the people involved in the movie, the real people. So Sonny, I'm still forgetting the name. Is this Sonny Vaccaro? Can you please check that for me? एक मिनट। Uh, sure. So Sonny actually became a सोनी key witness. वकारो, सोनी। Vaccaro, yes, Sunny Vaccaro. It's Sonny, but it is pronounced Sunny. हम्म। So he actually in 2014 became a key witness in a particular case which pitted college athletes versus हम्म। their universities using their names and likenesses without paying them any royalties. हम्म। So yeah, these people actually are kind of very crucial in terms of young sports persons and young athletes getting their due when it comes to the big bag world of licensing and franchising and royalties. It's very करेक्ट। important that these people, and something that India needs to still adopt, by the way. I keep coming back to India because I see a lot of these kids underrepresented. I हम्म। doubt even all players playing in IPL also have agents or not. I doubt it. I really doubt it. But ओह। that's what it is. That's how it is. They don't. Not a lot of players do. Maybe the top 25, 30 Indian players right now uh, have you know एजेंट्स। agents representing them. But having said that, uh,
just in the IPL, you imagine there are minimum 17 Indian players in each team and 10 teams. So there are around 150 Indian players playing in Hmm. IPL. Hmm. So out of that, I'm telling you, only like 30 have proper sports agents and proper sports representation, basically in terms of the corporate representation that they get and the money that they derive from it. So it's important. It's important. So these case studies actually propel uh, the whole sports community forward. Okay, but With actually, better it's money, with better representation, these sports persons, these athletes will also get access to better training facilities. They will be hmm, able to focus on their sport without worrying about the money aspect of it, etc., and so on and so forth. So that's what hmm, I feel. So it's exactly. in a lot of ways it's very important. एग्जैक्टली एक कमेंट है हमारे डॉक्टर भैया से यहाँ पे जन्नत मूवी इज द बॉलीवुड बॉलीवुड इन बॉलीवुड शोड कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ Yeah, yeah, क्रिकेट totally, एंड वी totally. नो हाउ दैट I to वाज I to I to think Hollywood should remake Jannat actually, like as a sequel to Air, where now Matt Damon is actually fixing basketball matches, and now he's and there is a Sonal Chauhan also in there. So no, I'm just kidding. So एक्टिंग but फिक्सिंग पे yeah, that बनी was थी that was पहला about the फिल्म corruption बॉलीवुड in में. cricket, which he's right. He's not wrong. He's quite right actually. It did show of that time at least, because this was pre IPL era. हम्म. So उस जमाने का उस मूवी में अच्छा दिखाया था जन्नत में कि व्हाई डू क्रिकेटर्स नीड टू गेट इनटू दिस, स्पेशली क्रिकेटर्स फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान एंड ऑल. Why is it easier for them to fall into this whole trap of match fixing and spot fixing and all of those things? So in certain ways he's right. So yeah, Okay. but I'm sure he has Actually, he has meant it as a joke. I know that for sure. नो बट बॉमिक ने भी एक अच्छी चीज कही. आई टोटली अग्री विद हिम कि Yeah. उन्होंने बोला कि शिमित अमिन कैन मेक वन, लाइक जिन्होंने आई थिंक चक दे इंडिया Oh बनाई yeah, थी. he made Chak De एब्सोल्युटली. India and he made Rocket Singh. So रॉकेट सिंह he has made one corporate movie and one complete sports movie. So I think स्पोर्ट्स. करेक्ट. he's the exact right guy to kind of mix these two worlds together and actually create something of that. So that Sachin story is amazing actually. Like I've always wondered why nobody has gone there. Like that Sachin story about, like, even before Air had come out, I think, like, more than a Sachin biopic, it is a biopic on this person that I'm talking about. I think it's Mark Mascarenhas, but I'll still get back to you on that. ओके. He's some Mascarenhas. I'm forgetting his first name. He सो passed ओके. away some years ago, but yeah, yeah. ओके. एक्चुअली बहुत अच्छी फिल्म बननी चाहिए ऐसा कुछ. बिल्कुल इंडियन बिल्कुल. लैंडस्केप में कैसे क्या डीलिंग होती है, और जैसे कि वी नो कि Absolutely. देखो वी नो कि अभी आई थिंक मैंने मुझे पता नहीं है लेकिन बॉलर्स एक सीरीज है जो ड्वेन जॉनसन है उसमें, तो कैसे So that's स्पोर्ट्स the वो reality करता है. show. Yeah, yeah, yeah. वो मुझे नहीं पता, लाइक मुझे सिर्फ थोड़ा एक थोड़े थोड़े लॉग लाइंस जैसे कुछ पता है, तो वैसे बट It's a वी नो reality show कि actually. But देखो yeah, बाहर का पता है अपने को कि कैसे बाहर का स्पोर्ट्स कल्चर और वो कैसे चलता है. आई थिंक जेरी मैगवायर एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे टॉम क्रूज yes, इट्स अ लीडिंग मैन yes, हु yes. इज द लाइक Beautiful स्पोर्ट्स example. एजेंट. Beautiful example. Yeah, yeah. एग्जैक्टली. सो Love that वैसे movie. Love that movie. I can't stress enough. Let's have a If you have not had a proper video on Jerry Maguire, let's have a conversation on that next or something. I would love to talk to you about it, because more than Moneyball, I feel Jerry Maguire is more closer to this movie. Air. ओके. And yeah, because it shows the sports agent side of the story, na, which is very similar to what they've done in Air also. Like sports person ka itna nahi hai. Sports person in both these movies is the secondary character. करेक्ट. It's about the agent, which is very fascinating. Very आई थिंक fascinating. ये जेरी मैगवायर है, और ये मिलियन डॉलर आर्म है जो कैसे Million dollar लाइक. Ramadan. एग्जैक्टली. Exactly. सो वैसे और आशी भी Another एग्री beautiful. करती है. हाय आशी, वेलकम Yeah, टू yeah. दिस डिस्कशन. सो लाइक लाइक ऐसे मिलियन डॉलर आर्म है जेरी मैगवायर. वैसे जैसे फिल्म्स होते हैं कि अपने को पता है कि वहाँ का वो लैंडस्केप और वहाँ का जो क्या है साइकी और वहाँ का बिल्कुल जो बिल्कुल सिस्टम है, आई वुड से वो कैसे बिल्कुल वो अपने बिल्कुल को इस फिल्म से या पता चलता है या शोज है से पता चलता है. आई थिंक बिल्कुल. फ्राइडे नाइट लाइट्स इज आल्सो एन एग्जांपल जो आई थिंक आपने नहीं देखा रहेगा, लेकिन नहीं, मैंने वैसे नहीं देखा. बहुत सारे एग्जांपल्स है वैसे. सो यहाँ Right. के लैंडस्केप में हमें पता नहीं है कि व्हाट is a sports agent's job is in Indian landscape, in Indian sports, or cricket being a very popular sports in India. Okay, like वो
लोग को फिक्सिंग और वो बायोपिक्स वगैरह में बहुत इन्वेस्ट हो गया, बहुत बहुत लाइक इनसाइड एज और ऐसे धोनी और जैसे फिल्म्स है The सो low hanging fruit. It's the low hanging fruit, na bro. It gives you more instant thrills, more instant gratification. Whereas investing in a story about a sports agent, which doesn't have any shosha attached to it. It is just a story of a sports agent trying to do his job. To be very honest. Uh, एक्चुअली आसपास का कुछ भी नहीं था, मैं आई वुड से, क्योंकि जब भी इनसाइड एज में कैसे नहीं था. ओके द पॉलिटिक्स, द करप्शन, ये वो सब कुछ उन लोग सब कुछ टच करने की कोशिश कर रहे थे. यहाँ पे कुछ नहीं था, नो मिर्च मसाला, नो नथिंग. आई वुड से कि ऐसे एकदम क्लीन जैसा फिल्म थी वो. पीपल कैन वॉच विद देयर पेरेंट्स एज वेल. ऑब्वियसली थोड़ा कस बिल्कुल, वर्ड्स बिल्कुल. वगैरह अगर साइड A lot of the people would consider this movie to be almost dry, I would say, for lack of a better word. A lot of people in India would consider this movie to be dry because they would say कि इसमें था ही क्या, मतलब हाँ ठीक है, उसको he wanted to sign a player, he signed a player, हो गया, इसमें क्या है? People will think that, which is totally understandable coming from an Indian perspective, because हम लोग की movies में कैसा है कि we need to, like, something needs to happen for the movie to exist. In this movie, nothing really happens. It is only a matter of, it is starting from point A, it is supposed to go to point B, it reaches point B, खत्म. No twists and turns in between. जर्नी ही लाइक ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट द एंड गोल. यहाँ पे वो फिल्म में वो Yeah. एंड गोल के ऊपर नहीं है, वो जर्नी के ऊपर है कि कैसे मैट डेमन के कैरेक्टर के और बाकी सारे जेसन बेटमैन लाइक बिल्कुल, बिल्कुल. बेन एफ्लेक और सबकी, नॉट जस्ट अबाउट द नाइकी पीपल बट अबाउट वो जो जॉर्डन फैमिली है, उनकी भी कैसे जर्नी थी कि पहले आदिदास और दूसरी कंपनी में उनका नाम हर बार भूल जा रहा हूँ, लेकिन लाइक सेकंड कंपनी है कन्वर्स है, लाइक वैसे, और फिर जाके नाइकी पे आना, लैंड होना कि कैसे. तो वो जर्नी दैट मैटर्स. और मनी बॉल में भी वैसे ही है कि लाइक आई एम लाइक मनी बॉल में मुझे पता रहता है कि लाइक वो ओकलैंड एथलेटिक्स प्लेऑफ्स में आती है, लेकिन लोग डिविजनल राउंड में ही निकल जाते हैं, लाइक एलिमिनेट हो जाते हैं. लेकिन वो जर्नी के ऊपर है कि कैसे उन लोग ने इतने कम पैसों में पूरी प्लेऑफ वर्दी सीरीज, सॉरी, टीम खड़ी की जो न्यूयॉर्क यांकीज को टक्कर दे सके, जो आई थिंक यांकीज भी नहीं कर पाए थे. और आई थिंक दे वर द बेस्ट टीम इन बेसबॉल दैट ईयर, आई वुड से 2002 में. सो वे कैसे कर पाए, एंड आई मीन इट्स सो मच गुड. I think आशी भी यहाँ पे कुछ लिख रहे, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ मैसिव बिजनेस ओवरसीज एंड इट्स फाइनली पिकिंग अप इन इंडिया as well. Okay, you do agree with that? She's very right actually, because in India, na, still to a certain extent, na, sports management is a very bikhra hua industry. It is not very organized. So it still needs a certain organization. It still needs a certain rules to it. Like how again Chris Messina's character shouts at Matt Damon saying ki how the F did you approach the Jordan family without my permission or without letting me know. Without me You know how intervening many it. rules it breaks. Sorry? Without me intervening it, क्योंकि वो एजेंट है तो obviously उसके बिना है कोई डील्स हो नहीं सकती वैसे. No, but actually I don't know why they took that creative call to show him in this light, David Falk का character. But David Falk is known as a very legendary sports agent. Legendary. मतलब he was one of those guys who actually changed the sports agency industry. Yeah. In which last May they also mentioned that he actually sold his company for $100 million. So $100 million की कंपनी उसने खड़ी की out of scratch, तो मतलब उसने भी कुछ ठीक ही किया लाइफ में. Not selling anything, just saying. So David Falk was also another legend आदमी who did some really amazing work, and in a lot of people's accounts they have given credit to David Falk to actually have convinced Jordan for the Nike deal. In this movie they kind of alluded to it, but they did not show it directly. They were like he shouts at him, at Matt Damon's character, and then eventually he's like but by the way the family is going to meet you, like in a very angry way he says it, but he says it. So somewhere or the other he was not completely against it. He got pissed off with the fact that Sonny's character went behind his back. He got pissed off because of that, but David Falk also wanted the deal to happen. So he was a foul-mouthed guy, but he was a good at heart guy, which is a very good character to show. I felt that about the character, which is what he was in real life also, according to many people, including Phil Knight. Yeah. Okay. Comment है अपने भौमिक भैया से regarding Sachin's story. He will ask for a huge amount of the ratio level.
and it makes it very strange production wise, and then the ads all will have fake names. हाँ यार, इंडिया सच में में यही इस इश्यूज है ना, इसमें भी इंडिया में ऐसी यही इश्यूज मुझे है. एग्जैक्टली The लाइक only way that this movie can exist is if Sachin produces it himself. बट फिर That's the only वो way this can लेकिन exist. Otherwise, विशेष it ऐसे cannot लगे, exist. लेकिन विशेष आपको ऐसे लगेगा भी ना कि अरे यार ये तो उनके पर्सपेक्टिव वाली है, उनके ही लाल करने वाली जैसी है। लाइक इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें माइकल जॉर्डन डायरेक्टली किधर भी इन्वॉल्व नहीं थे, जैसे आपने पहले ही बोला था। Correct. वैसे वैसे था। सो इसमें अगर सचिन की कोई फिल्म में ऐसे इन्वॉल्व, यहाँ पे सचिन खुद इन्वॉल्व हो, तो काइंड ऑफ थोड़ा बायसनेस जैसा दिखता है वहाँ पे कि यार ओके, वो अजर जैसा हो जाता है कि लाइक हाँ वो काफी सेंसर्ड जैसा, लाइक सेल्फ सेंसर्ड Correct, जैसा correct. But दिखता again, as I said earlier, also that this is not supposed to be a Sachin story. This है। is हाँ supposed to be हाँ। a Mascarena story, right? So हम्म it's like what Sonny Vaccaro was to this story is what Mascarena's was to Sachin's story. हम्म If you're going on that tangent, is what I mean, करेक्ट। right? So Sachin को किसी भी लाइट में दिखाना is not necessary. हम्म Sachin is just being talked about. That's all. करेक्ट। हम्म It's about the other people behind the scenes who actually made that deal happen. करेक्ट Sachin just करेक्ट। signed on the 100 crores that he got. हाँ हाँ बराबर। So, so that's the thing. So that's the reason it can exist. But yes, he is right on that. One other factor that they cannot take any real names. So that's हम्म India. Mein again, that's a major issue because in a lot of these movies, they do take real names. Movies like The Founder, Ford versus Ferrari, Social Network, etc., etc., Devil Wears Prada. So many movies they have taken real corporates names, even the rivals. So एक्चुअली राइवल्स में ही वो वही hmm, सेम चीज जो हॉलीवुड डेक में देखने मिलती है कि राइवल्स में भी उन लोग ऐसे नाम लेते, लाइक प्राइम एग्जांपल फोर्ड वर्सेस फरारी के, हम लोग फरारी को लाइक उन लोग काइंड ऑफ थोड़ा बैड लाइट में जैसे दिखा रहे थे कि हाँ हम लोग तो काइंड ऑफ फॉरेनर्स है और हम लोग को फॉरेनर्स को बिल्कुल बीट बिल्कुल. करना है वैसे। वो सब इसमें भी तो दिखाना भी एट इसमें द भी एंड। इसमें भी एक्चुअली किया. दे एक्चुअली डिड अ लिटिल बिट ऑफ दैट व्हेन सनी ब्रिंग्स अप एडिडास का फाउंडर हाँ अडोल्फ हाँ हाँ डैसलर का एग्जैक्टली कि कौन भाई कौन नाजी डिसीजन नाजी लेता है। पास्ट, because he एग्जैक्टली did have कौन। a Nazi past. हम्म Adolf नहीं Dassler इवन did have yeah. इवन आई थिंक कौन डिसीजन लेता है किसको पता नहीं, हम लोग लाइक वहां पे अगर लाइक वो वायोला डेविस की कैरेक्टर को बोलते हैं कि भाई अगर That is still आप not यहाँ पे as bad. That is still not as bad as showing somebody to be a former Nazi. Just saying. मतलब वो ठीक है कि indecisive थे वो लोग and they felt हाँ that they were too good for Jordan or whatever. But हम्म but just to outrightly say that the founder of Adidas was an ex-Nazi was very ballsy. Very ballsy, I would say. Like I don't know how Adidas has allowed this to happen because they've done a like Adidas. I know it for a fact. Over the past 40-50 years, they have spent millions of dollars in just trying to hide Adolf Dassler's past, in ओह trying to whitewash the guy. Yes, they have done a lot of things ओके। to just ensure that nobody comes to know that Adolf Dassler. He changed his name. Adolf Dassler does not go by Adolf Dassler after once he moved to the US. Adolf Dassler went by Adi Dassler because ओके। Adolf word Adolf हाँ Hitler. So he did हाँ not करेक्ट। like. So he changed his name and everything, and he changed his complete identity and everything. And Adidas, as a company, put in millions of dollars in trying to whitewash his public opinion and his you know whatever people's perspective of him was. But this movie kind of, I was very surprised that they actually brought it up. Very surprised. Like it's one thing to show Adidas as a rival company and being indecisive is also not that bad a thing. But to bring up his Nazi past was a little, I felt, wow. And Yeah. today Adidas is the official sponsor for the Indian cricket Just team. today, yes. Just today that news came in, yes. Just today. और Adidas has been selected. विशेष सच बोलो ना, मुझे ये सब पता भी नहीं था कि इतना बड़े लेवल पे ऐसे कुछ होता भी है कि अरे ओके एक भाई. नो 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 सो आई वुड से कि एक जस्ट एक स्पोर्ट्स पर्सन को कोई ऐसे ब्रांड स्पॉन्सर करता है कि हम लाइक तो हमारे ही जूते पहन वैसे लाइक मुझे हाँ वो ब्रांड्स के काइंड ऑफ थोड़े स्पॉन्सरशिप जैसे होते हैं, आई थॉट मतलब उतना ही होता होगा और फिर जाके उन लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं कि
ओके पूरी टीम जो पहन रही है वो आप लोग को पहनना रहेगा, मुझे तो वही लगता था पूरे पूरे नहीं नहीं वक्त से कि ओके लाइक ऐसे नहीं था कि नहीं एक स्पोर्ट्स पर्सन वही वो जो पहनेगा, लाइक स्पॉन्सर ने दिया है वैसे। नो 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 स्पॉन्सर ने फॉर एज अ किड ग्रोइंग अप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि एमआरएफ बैट भी बनाता है मी because टू, Sachin क्योंकि used to सचिन, हाँ Sachin करेक्ट, used to play with MRF bat and हाँ Ganguly used to play with Britannia bat. I remember at that time. हाँ So I हाँ used to be like, अच्छा ये लोग बिस्किट भी बनाते हैं बैट भी बनाते हैं और ये लोग हाँ, टायर भी इवन बनाते हैं बैट भी राहुल बनाते हैं द्रविड़ भी ओ राउंड रैबिट भी करेक्ट सो हम्म फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट कि these companies also make bats and हम्म, we used to get those cheap knockoff bats जो लोग सिर्फ सीएट का सॉरी एमआरएफ का स्टिकर लगा के और ब्रिटानिया का मेरे स्टिकर खुद लगा के के बेच पास देते है, थे हमको लगता था वो सचिन वाला बैट है हमारे पास वो मेरे तो खुद बहुत के बाद पास में पता है। चला दैट इट इज स्पॉन्सर्ड लाइक बैट कोई और बना रहा है ये लोग हाँ स्पॉन्सरशिप पे कमा रहे हैं सो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ मी वही कमिंग टू नो कि क्रेज ये था इतना बड़ा सच गेम है में, इतना बड़ा गेम है ये था सच में, क्योंकि मेरे पास खुद के पास आरबीके वाली बैट थी वैसे, सो वो नो जो बट एटलीस्ट धोनी आरबीके यूज कर, but at least RBK is still a sports apparel, sports हाँ good company. करेक्ट RBK is करेक्ट, Reebok. It is at least still in the sports domain. MRF क्या है भाई? MRF थोड़ी ना कुछ बनाता है. MRF टायर एग्जैक्टली, बनाता है भाई. सिर्फ टायर बनाता है और कुछ नहीं बनाते वो लोग. हाँ So yeah, नहीं डेफिनेटली. So yeah, yeah. it was great talking to you. Like I We are think out of और एक time. comment आया है, yes, but और अच्छा. एक comment आया है आशी का. Fun fact: Adidas has just been signed as an official kit हाँ, she's sponsor saying the for same thing that Mumbai. Bombing just said. Yeah, yeah, Exactly, yeah. but yes, Just it today it happened was actually. Coincidentally, just today it happened. okay. Oh, okay. It was Yeah. great talking to you. बहुत मजा आया यार. Likewise, brother. I wanted to talk upon so many more aspects of this movie, but chalo koi nahi. Maybe sometime in person we can get on to it. One last thing I True. would like to say, two things actually, just to wrap it Oh, up. One, loved Chris Tucker's performance as Harvey White. He was too good. I have been wanting to see him play a serious role and play a role with gravitas rather than just doing his loud guy from the Bronx shiz that he does. You know, the damn thing that he has going for him, which has now become a meme. I wanted him to do something more than being just that loud sidekick character. I wanted him to okay. do a character with some purpose to his life. And that is what he finally did in this movie, which is great to see. Great रश to आर see. वाला जैसा कुछ. Most of his roles have been like in that tonality, of that Rush Hour wali tonality. This didn't you think that this was also like one pitch lower for him, which is Correct. great to see. To him do something different other than just being outrightly comical. So great to see him. Secondly, loved all the 80s ka soundtrack that they've put in this movie. It was good to hear those songs, Born in the USA, etc., etc. So many great songs. अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे कौन से थे. I'm not a big Western music fan, but I know these songs because of my love for Michael Jordan and all things Jordan. Because एक song उसमें Jordan related भी था. Thank you Jordy या कुछ नाम है उस song का. I can't remember the name of that song. But yeah, it's a song which is specifically it was made for Michael Jordan. So it is अच्छा. shown when the news about when the whole when they're in the end they're showing Michael Jordan's real footage हाँ आई थिंक वो जो and the parents ka they show. That's when they हाँ play that song. Yeah, that's when they correct. play that song. It's lovely. It's lovely. So the लाइक उनके uh, लाइक डिवोर्स और भी बहुत कुछ लाइक ऐसा वो जो बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर का चीज बताता है आई थिंक वो. 14 there was some 14 15 good 80s ka very classic songs which are very closely associated with sports with pop culture with everything they actually captured the spirit of the 80s very well which is something that is a rarity like it takes a good director to actually uh, do it without looking gimmicky, you know. And I personally feel that Ben Affleck is a better director than actor. So I know controversial statement towards the end. so, so yeah, but yeah, the last wala footage of Michael Jordan ka real life clippings just cracked me up. It made me it made me not crack me up in terms of making me laugh, in terms of making me cry. So it actually kind of it brought a tear to my eyes because he has faced a lot in his life and yeah. So that was overall great movie. Like loved it. That's why Me I too. agreed to do this show with you because I wanted to just talk so much more about this movie actually. But yeah, did you know that the actor who plays Viola Davis's husband is a real Husband life actually husband is the also? yes absolutely I Yeah, know. मैं मतलब मुझे पता था yeah, he is the actual husband of Viola yeah, Davis. yeah. Okay, so let's wrap this up in Absolutely, a bro. very good Absolutely. point.
Okay, thank you Yes. so very much for coming to my channel. बहुत मजा आया You're most बात करते welcome. हुए. My pleasure, totally. And an honor to be here. And hopefully, we can do this sometime again in the future. Absolutely. Finally जाके ये episode like आपके साथ ये करना है वो. So yes, thank you so much and good night. Good night to you too. Good night to everyone.